चैप्टर 28 चैप्टर 28 में है प्रोविजन एज टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस 379 से 391. Which chapter of the BNSS provides for provision as to offenses affecting the administration of justice? Chapter 28. Magistrate to whom a complaint is made under section 379 or 380 of the BNSS shall proceed as far as may be to deal with the case as if it were instituted on a police report. Which section provides that a magistrate to whom a complaint is made under section 379 or section 380 of the BNSS shall proceed as far as may be to deal with the case as it were instituted on a police report? Section 382. Which of the following section of the BNSS relate to summary procedure of trial for giving false evidence? Section 383. What punishment can be awarded to the accused under section 383? Imprisonment which may extend to 3 months or fine which may extend to 1000 rupees or both. The provision in the BNSS which may be invoked by a civil court is provided in the section 384. Discharge of offender on submission of apology is prescribed in BNSS under section 387. Chapter 29, the judgment. सेक्शन 391 से 391 से 406. Chapter 29, judgment. Which chapter of the BNSS provides for the provisions related to judgment? Chapter 29, judgment. Judgment का chapter है 29. According to section 392, 1 of the BNSS, the presiding officer shall pronounce the judgment after the examination of the trial at some subsequent time, not later than how many days? कितने दिन बाद कर सकता है? 45 days तक. प्रोनाउंसमेंट जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट के बाद ट्रायल के टर्मिनेशन के बाद कितने 45 days. According to proviso to section 392(4) of the BNSS, the copy of the judgment shall be uploaded on the portal within a period of how many days from the date of judgment? जजमेंट के डेट से कितना दिन के अंदर में पोर्टल पे अपलोड हो जाना चाहिए? 7 दिन के अंदर में. In which case the presence of accused may be dispensed with at time of delivering the judgment. When the person attendance of accused has already been dispensed with, when the judgment is of पहले से ही डिस्पेंस किया गया हुआ है या एक्यूटल होने वाला है तो प्रेजेंस ऑफ एक्यूज जो है वो जरूरी नहीं रहेगा. When one of the following sections of the BNSS deals with language and contents of the judgment. Section 393, language and contents of the judgment. 393 में है language and contents of the judgment. Section 393 का 3 of the BNSS provide the reason for imposing death sentence. 393 के 3 में रीजन फॉर इम्पोजिंग डेथ सेंटेंस दे रहे हैं किसी को तो रीजन फॉर इम्पोजिंग डेथ सेंटेंस लिखना पड़ेगा. 393 के 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द BNSS प्रोवाइड that when any person is sentenced to death, the sentence shall direct that he be hanged by the neck till he is dead. 393 का 5 to be hanged till death, he may be hanged till. 393 के 5 में है when any person is sentenced to death, the sentence shall direct that he shall be hanged by neck till he is dead. 8वां में है under which section of the BNSS court can order when fine is not part of sentence any amount to be paid by accused as compensation. 395 के 3. Which section of the BNSS provides for victim compensation scheme? 396 में है victim compensation scheme. 396. According to section 396 of the BNSS, where the offender is not pressed
or identified the victim or his dependent applied for the award of the compensation, within what period the state or district legal services are required to complete inquiry in this regard? 2 months. Under Section 396 BNSS, which of the authorities authorized to decide quantum of compensation? The state or district legal service authority. Decide quantum of compensation, a state or district legal service. Which section of the BNSS provides for provision related to treatment of victims in certain cases? Section 397, treatment of victim. Treatment of victim in certain cases. 13 में है, in which of the following offences all hospitals, public or private, shall immediately provide first aid and medical treatment free of cost to the victim, both and B. 64 से 70, 124 1 of the BNS and 468 10 of the POSCO में free medical treatment to the victim. 14 में क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द BNSS compensation is paid to person groundlessly arrested? Section 399. 15 में है, which section provides that every state government shall prepare and notify a witness protection scheme? Witness protection scheme कौन सा स्टेट नोटिफाई करेगा? सेक्शन 398. 16 में अंडर सेक्शन 399 में स्टेट में by whom the case is heard may award such compensation not exceeding 1,000 rupees to be paid to any person groundlessly arrested by the person so causing the arrest. कोई भी अगर अरेस्ट करता है तो 1,000 रुपया ज्यादा 1,000 रुपया उसको ग्राउंडलेस अरेस्ट पे दिया जाएगा कि आपको ग्राउंडलेसली अरेस्ट कर गया है, जो अरेस्ट करेगा उससे 1,000 रुपया फाइन. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 399 3 of the BNSS, any person who cannot pay compensation awarded under this section shall be sentenced to simple imprisonment for 30 days. अगर कोई compensation नहीं देता है तो 30 days का imprisonment होगा. सेक्शन 399 के 3 में लिया गया. 18 में which of the following sections of the BNSS relates to release of offenders on probation of good conduct? offenders को रिलीज करने के लिए on probation for good conduct में है सेक्शन 401. Which of the following facts cannot be considered by a magistrate in case of release of offender after due admonition? Financial condition of the offender. Who may be released on probation of good conduct under section 401 of the BNSS? Any person not under 21 years of age, any person under 21 years of age, any woman, कोई भी. Which section of BNSS provides that no court shall alter the judgment after it has been signed? अगर जजमेंट साइन हो गया है तो उसमें अल्टर नहीं होगा. सेक्शन 403 बोलता है कि जजमेंट अगर साइन हो गया है तो वो अल्टर नहीं होगा. कोर्ट व्हेन इट हैज साइंड इट्स जजमेंट और फाइनल ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ ए केस में करेक्ट क्लरिकल और अर्थमेटिकल एरर. क्लरिकल या अर्थमेटिकल एरर को करेक्ट कर सकता है बट जजमेंट कैन नॉट बी चेंज. 23 में as soon as the judgment or final order disposing of a case is signed, court can only correct clerical error. क्लरिकल मिस्टेक को बस करेक्ट कर सकता है. सेक्शन 404 of the BNSS entitles a person accused of an offense receive a copy of judgment free of cost when judgment is pronounced. जजमेंट अगर प्रोनाउंस हो जाएगा तो अक्यूज को एक फ्री कॉपी दिया जाएगा. चैप्टर 30 सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कन्फर्मेशन. डेथ सेंटेंस के लिए कन्फर्मेशन 407 से 412. अगर कोई डेथ सेंटेंस हो रहा है तो उसको कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट भेजा जाएगा 407 से सेक्शन 412 के तहत. सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कन्फर्मेशन चैप्टर 30. पहला में है विच चैप्टर ऑफ द BNSS प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजन रिलेटिंग टू सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कन्फर्मेशन चैप्टर 30. विच सेक्शन. दूसरा में है विच सेक्शन ऑफ द BNSS प्रोवाइड्स फॉर सबमिशन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ डेथ sentence passed by Sessions Court prior to its execution. Section 407. तीसरा में which section of the BNSS provides the power of High Court
to confirm sentence or annual conviction. Section 409. Which section of the BNSS provides the power of High Court to confirm sentence or annual conviction? Section 409. A sentence of death by a lower court must be confirmed by High Court. A sentence of death by lower court must be confirmed by High Court. When the Court of Session passes a sentence of death, then the proceedings are submitted to the High Court and then death sentence is executed only after the confirmation of the High Court. जब तक High Court confirm नहीं करेगा तब तक death sentence को नहीं लागू किया जाएगा. On being submitted the sentence of death by Court of Session, the High Court में कंफर्म कर सकता है, एनल कर सकता है, मे पास अदर सेंटेंस या कोई अदर सेंटेंस भी पास कर सकता है. सातवां में हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर रिक्वायर्ड टू साइन द कंफर्मेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस. कितने जजेस का बेंच बैठता है डेथ सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए? तो 2. डबल डीवी से कंफर्म होता है डेथ सेंटेंस. डेथ सेंटेंस जो है वो डीवी द्वारा कंफर्म किया जाता है.